I believe that today, due to rain, many of the people could not come, but still it is okay. Let's hope that from tomorrow we'll have more and more participants, and let's also hope that today also, after some time, I mean before Maghrib or by Maghrib, we'll have more participants coming here. So here, this spoken English class or English academy class, as I said, it is not just for Ali Public School, it is also for the entire public of Tumkur. Okay, it is also for the other community. It is also for the students of other schools, other college, everywhere. So today, the English and its importance, it is inevitable. No one can say like I don't need the knowledge of English. For everyone, even the auto drivers, if you say if you see in Bangalore, they also speak good English. So soon the time will come everywhere, even in the places like Tumkur or in the villages, there will be the situation only if you know good English, you can communicate. Do you know I was working for an American company. It was a medical insurance company called Humana. Humana was a medical insurance company from USA. In USA, there's a state called Louisville. We call Kentucky. You might have heard KFC, Kentucky Fried Chicken, where the boxer Muhammad Ali comes from. So when we were working with them, the main thing what you need is English language. Correct? We used to log in at their time. I mean, we log in at 6 o'clock in the evening, and our counterparts are who? The Americans. If you just know Urdu and if you just know your Kannada, that will not help. So there have been revolution. We have the trainers like Munawar Zaman sir. I had been to Hyderabad about 6 months ago. So what I was learning there, the mission, what I was seeing is that many trainers among Muslims, they are working on the revolution that our community people, they should come forward, they should learn English, they should speak in English. You just take the example of going to the office. Okay, recently my brother, no, he was saying like in my native, he was saying like I'm not getting the TC, school में TC नहीं दे रहे हैं. So I told her, how did you go, how did you approach? Then I took him, come, I will show you how to get the TC. So I did not speak to any of the office people in the school. I directly went to principal chamber. I started talking in English. Say, this is my cousin brother. He has studied here 15 years ago, and I'm sure you know about the government rules. As per the government records, you have to maintain the TCs forever. So I would like to see the TC of him. So when you speak in English, now they are well alert. In 5 minutes I got the TC. कोई एक ऑफिस में तुम्हें इंग्लिश में बात करो तो फटाफट काम हो जाता है. और हमारे कम्युनिटी में एक ये भी ऐसा एक सिचुएशन है. वी हैव उलेमास, माशाल्लाह उलेमा किराम, दे आर रेस्पेक्टफुल, बट व्हेन दे गो टू सम प्लेसेस, बैंक को कहीं गया तो उलेमा किराम उनको इंग्लिश में लिखने नहीं आता, कुछ बोलने नहीं आता, इसलिए दूसरों के हेल्प लेना पड़ता है. दैट्स नॉट अ गुड साइन. करेक्ट? सो इंशाल्लाह वी आल्सो हैव अ co-trainer. I have requested our ex English ma'am, Tasmia ma'am. So it is a great honor that she is also with us. So I would like to welcome everyone first. I also request Tasmia ma'am, please come on the stage. I would like to hear your opinion also about the importance of English. Why should they learn English? So your opinions will also matter, inshallah. Also we'll have some interviews. We also have the Muhtamim, the principal of Kubul Madrasa, correct? माशाल्लाह बहुत सारे ये इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे शुरू करते हैं बोले तो नाउन बोले तो क्या, नाउन इसम को बोलते हैं हमें नामपद, और वर्ब फील्ड को वर्ब बोलते हैं. नाउन वर्ब, देन यू हैव प्रोनाउन एडजेक्टिव, सो दे मेक इट ऑल मिस. ऐसे सुन रहा है ये तो मुझे समझने का ये नहीं है. इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर तुम्हें इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर को भूल जाओ. ग्रामर आएगी, हमें सब अपना मदर टंग सीखे है ना, उर्दू सीखे. वैसे पहले नाउन क्या है, वर्ब क्या है, हाँ ये इसम फील सभी माजी मुजारी का तभी सुने. स्टिल वी आर स्पीकिंग उर्दू इन करेक्ट ग्रामर.
है ना, सही ग्रामर में उर्दू बात कर रहे हैं। ऐसे ही नेचुरली एक जुबान को सीखना है। पहले ये हटाने की इंग्लिश मुश्किल है, वो सोच हटाए तो तुम्हें आधा इंग्लिश सीख गए, बाकी आधा क्या सीखना है, बाकी आधा बात करने शुरू करने में है। अब एक लैंग्वेज, हमें इतने सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल से देख रहे हैं, फिर भी बच्चों को इंग्लिश बात करने नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? बहुत बहुत बड़ा सवाल था, ऑल इंडिया लेवल में रिसर्च हो गया ये बात, पर जवाब बहुत सिंपल निकला। कोई जुबान बात करने के लिए सिर्फ दो एक्शन की जरूरत है, एक सुनना और एक बोलना। हमें स्कूल में क्या करते हैं? एक पढ़ना और एक लिखना। स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमें इंग्लिश में बात करें। बात करना तो पढ़ने लिखने से कैसे है? सुनना है और बोलना भी है। ओके, सो इन दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट एवरीवन हु कम हियर वी गारंटी दैट यू ऑल विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। जितने भी यहाँ अटेंड करेंगे मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें सब इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करोगे। सिंपल फॉर्मूला है, हमें इंटरव्यूज, कम्युनिकेशंस, वी हैव सम डायलॉग्स, मतलब हमें डायरेक्टली इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश का फॉर्मूला कुछ नहीं देखेंगे। समझो तुम्हें जाके अब इंग्लैंड में रह रहे हैं, वहां तुम्हें जुबान खोलना है तो कौन सा जुबान बात करना? इंग्लिश में बात करना, करेक्ट? तो मेन थिंग, हमें यहाँ माहौल प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश बात करने के, उसमें आप लोग आसान से सीख जाएंगे। पर एक ही शर्त है, इंग्लिश मुझे सीखने नहीं आता, इंग्लिश बहुत मुश्किल है, वो एक सोच नहीं रखना, ठीक है? अब ये बच्चे को मैं इंग्लिश में इंटरव्यू कर रहा हूँ, सो आप लोग सब देखिएगा। Assalamu alaikum, I'm here on stage of Al English House Academy. We take the interview of our students to develop their communication personality. Let me speak to this boy. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. What's your name? My name is Muhammad Izan Sheikh. Muhammad Izan Sheikh. Where's your house? My house is in Hekere. Okay, what's your father's name? My father's name is Dada Pir. What's your mother's name? My mother's name is Mohsina Khanum. Which school are you studying in? I'm studying in Alif Public School. Which class are you studying in? I'm studying in 7th standard B section. Okay, what do you want to become after completing your education? Hafiz Quran. You want to become Hafiz al-Quran, mashallah. About your favorites, what's your favorite food? What do you like to eat? My favorite food is biryani. What's your favorite color? My favorite color is white. Okay, what's your favorite vehicle? No. Like the car or bike, what do you like? Kawasaki Ninja. Okay, who's your best friend? My best friend is Yasir. Okay, and what's your favorite tourist place where you want to go? Saudi Arabia. Saudi Arabia you want to go, inshallah. And do you like Ali Public School? Yes. What do you like in Ali Public School? English and Maths. Okay, and what your father is, what he does? He's farmer. He's a farmer. What your mother is? Home wife. Okay, housewife she is. Do you have any brother or sister? Yes sir. What's your brother's name? Muhammad Samir Sheikh. What's your sister's name? No sir. You don't have a sister. Okay. So, fine. It was nice talking to you and all the best for your future. Thank you sir. इसका पहला क्लास का एक्सरसाइज मैं चाहता हूँ, what I expect is that everyone can once come to the stage and wait, see, these kids are so excited. When I said you can come, they already started. Okay, you can just say salam and say your name and your place. As simple as like, Assalamu alaikum, my name is Muhammad Haris, I am from Tumkur or I am from Bangalore. You can just say a brief introduction about yourself. Okay, and yeah, in the meanwhile, I thought there are some more students who wants to give a speech. So, okay, but 3 students, how many are there? Okay, all of you come here on the stage. Okay, these are called Badri batch students. इनको फाउंडेशन बद्री बोलकर इनके बैच को नाम रखें। ओके, ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, और इनके बारे में एक बात बोलो तो इनको इससे पहले रेगुलरली स्कूल जाने नहीं हुआ और पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। यहाँ एडमिशन के लिए आए, यहाँ एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट में फेल हो गए बच्चे। क्या इनको लिखने नहीं आया? बेसिक इंग्लिश, बेसिक कन्नड़ा, ABCD, बेसिक उर्दू, वो सब लिखने नहीं आया। यही बच्चे कितने वारों के क्लास लिए? 1 मंथ हो गया यहाँ के, 1 मंथ वीकली 1 क्लास, सिर्फ संडे होकर इनको 3-4 क्लास अकेडमी किए हैं। और इनके स्पीच एक like 1 by 1 we will hear their short speech. Okay, after that we'll tell you. You can start.